this computer. Okay, so today's topic of discussion is shifting of a graph of a function. Okay, and I do need some tools. There are tools now. Okay, I need straight lines, and there's no straight line. Okay, no problem. So first of all, there are two types of shifting: horizontal shifting, vertical shifting, and third one, oblique shifting. So first of all, we are discussing vertical shift. Okay, if you have a graph whose that y is equal to f of x, you have this graph. For example, you know that graph of y equal to x squared. What is graph of y equal to x squared? Y equal to x squared graph is somehow this one passing from origin. Am I right? This is graph of y equal to x squared. And now we want to shift this graph vertical upward or down. So mean if you have a function, you know this is noun graph to you. This is noun graph of any function. This f of x can be x squared, x cubed, 1 over x, whatever this f of x is. But you have to plot y equal to f of x is same, that is known to you, but there is some constant k, right? No, this k can be positive. K belongs to a set of real numbers. If mean you have to plot okay, you have to plot this one, right? But there are three cases. Case one, if k is positive, if k is positive, then will shift upward. What do you mean? Mean this is a graph y equal to x squared, and this graph is known to us, but we have to plot. Then there is a question. Then please plot y equal to x squared plus 1.5. So this is your k. This is your k. Now you have to check that whatever is getting added in this x square, that is a k, that k is a positive, where k is equal to 1.5, and that is positive. So then your graph, this graph will shift 1.5 unit upward. Same graph, just take this graph and move this graph 1.5 unit upward. In other sense, you can say that this graph, this is your original graph. This is your scale 1.
2 and 1.5 is somewhere here. Just pick this graph and plot pass from this point. Same this thing. This one. This is the graph of y equal to x square plus 1.5. If you know this rule, then you don't need any point, anything, or table of points to plot this of y equal to x square plus 1.5. See, now there is another case 2. But this सर आवाज बहुत ज्यादा लैग कर रही है आपकी, ग्लिच कर रही है आवाज। मेरे ख्याल से मैं सिस्टम में ही खड़ा हूँ, यहाँ पे क्लासरूम में ही हूँ, यहाँ पे तो इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं होता। तो सिर्फ आप जो लिख रहे हैं उसकी समझ आ रही है, वैसे आपकी बिल्कुल नहीं आवाज आ रही, लैग करके आ रही है। जस्ट गिव मी few minutes, just a minute. Is it fine now? सर अभी तो कदरे हाल बेहतर है। चले, let's see. Okay, this case 2. If this k is negative number, then sorry, not this one. Then this graph f of x will shift downwards by k unit. Okay, mean you have to plot x square plus into minus 1.5. Mean other words, you have to plot x square minus 1.5. Then your same graph will shift downward 1, minus 1, minus 2. This was your original graph. And your graph will shift minus 1.5 unit downward. So this was graph of y equal to x square.
and this is graph of y equal to x square minus 1.5. So this is called vertical shift. Vertical shift upward, vertical shift downward, but here you know that k is getting added in f of x. This is a very crucial thing. Now, what is different between vertical shift and horizontal shift? Okay, here k is getting added in y. You know, f of x is along y axis. F of x is plotted along against y axis. Now, if we have to shift vertically, then you have to add or subtract from y coordinate, right? Now, what about horizontal shift? Okay, okay. I was searching for this thing. No, it's fine. Okay. Now, horizontal shift. Horizontal shift means you have graph y equal to x square, and you know the graph of this function, that is this one. You want to shift this graph on right hand side of the origin on the same altitude, or on the left hand side with the same altitude. There is no change in y, but change in x coordinates only. So if you think about this thing, so you need to change only in x, not in y. So let we know the graph of, say, this f of x is x squared, and we know the graph of this f of x. Okay, and you need to plot graph of y equal to f of x plus h. No, change in x, not in y. This is change in x, right? So if this h is positive, if h is positive, then you have left left shift, and if this h is uh, negative, then you have right shift, right? See, if case one, if h is positive, then okay. First of all, we will deal this case one. So mean you need to plot y equal to x plus 1 unit. See, this is x plus 1 square. So actually original graph was x square. So plus 1, say that is a horizontal shift. And we know that we are very well understanding this situation, that our graph of y equal to x square is getting shifted in horizontal way from right or left. So we have mentally prepared for this one. So you need to think about the original function, the parent function, that is y equal to x square. And we know the graph of y equal to x square. No, this is h. H is 1. Now, see, you have to compare h equal to 1, that is positive, and your graph will shift towards left side. Towards left side. Okay, see, the graph of x plus h, x plus 1, original graph was this one, and we have this one 1, 0,
-1, -2, and so on. So here h is 1. So our graph will shift by h unit, by 1 unit. So 1 unit is this one. So this becomes the origin of this graph. And where this one? If you have y equal to x plus 3 by 2 square, see, your graph will shift 1.5 unit left hand side. This is 1 unit right hand side, this is 1 unit left hand side, this is 2 unit left hand side. 1, 2, original was this one. 1.5 will lie here, and you have this one. So this is the plot of y equal to x plus 3 by 2. See the difference. This is not equal to y equal to x square plus 3 by 2. This is for vertical shift, and this is for horizontal shift. This is horizontal, and this is vertical. See the difference. This 3 by 2 is added in y coordinate. This 3 by 2 is added in x. So this is the main difference in horizontal shift and in vertical shift. Okay, what about second case? When case 2 is if h is less than 0, then you have to move the graph right hand side by h unit. Am I right? Hello? सर वर्टिकल एक और दफा बता दें। ये हॉरिजॉन्टल की क्लियर हो गई आपको पिक्चर? थोड़ा सा नीचे नजर नहीं आ रहा। नजर कहाँ से नहीं आ रहा? स्क्रीन तो बेटा मैंने आपसे शेयर की हुई है। स्क्रीन एडजस्ट होती है, इसको आगे पीछे कर लो ऊपर से। If h is less than 0, mean h is negative, then towards right. Mean to say, if you have graph y equal to x square, that is graph of parabola, and you need to plot y equal to x plus into -3 by 2. In other words, you can say that x minus 3 by 2 square. So this is your h. What is h here? Here, which is -3 by 2. And you know the rule, when h is negative, and your original graph will move towards right hand side by -1 by 1.5 unit. This negative shows just shows that this will show that your movement will be on the right hand side or on the left hand side. If this is positive, then your graph will move towards left hand side. And if this is a negative sign, then your the original graph will move by this unit, whatever that is unit is 3 by 2, suppose that. So we'll move on the right hand side by 1.5 unit. So then this is a horizontal shift, and your graph this graph will move. This was the origin. This origin will shift on the right hand side by 1.5 unit. Am I right? Quite clear?
एनी इशू? सर ये बॉक्स एच नहीं के बदल बाद जो सकता हमने था 3/2 पे ये हुई है ना, y इज इक्वल टू, ये वाला एक बार जरा प्लीज रिपीट कर दें। सॉरी दोबारा बोलें। बॉक्स से कम नहीं होता। हाँ सर ये जो y वाला है ना, y इज इक्वल टू x प्लस माइनस 3/2 का स्क्वायर, और ये इसके जो पॉइंट्स बनाए हैं वो एक बार रिपीट कर दें। इसमें कुछ कोई पॉइंट नहीं बेटा बनाए। ओरिजिनल ग्राफ हमारे पास ये था, जो जिसका ओरिजिन जो है वो 0 पे है। इसका ओरिजिन हमने शिफ्ट करना है। ये नेगेटिव शो कर रहा है कि नेगेटिव बता रहा है कि आपने राइट जाना है। अगर ये पॉजिटिव होता तो हमने लेफ्ट मूव करना था, नेगेटिव है तो हमने राइट मूव करना है। तो हमने कितने यूनिट राइट मूव करने हैं वो हमारे पास ये यूनिट बता रहा है। ये क्या है, 3/2 कितने यूनिट होता है, 1.5। तो हमारा ये ओरिजिन जो होगा, जो यहाँ पे ओरिजिन जो ओ से पास कर रहा है, ये अब ओरिजिन यहाँ से उठाएंगे, इसको 1.5 यूनिट राइट साइड पे लेंगे, राइट हैंड साइड पे। तो हमारे पास ये ओरिजिन था, ये 1 है, ये 2 है, 1 और 2 के दरमियान में 1.5 आता है, तो ये 1.5 मैंने लगा दिया और इस ओरिजिन को मैंने 1.5 पे ड्रा किया। सेम ग्राफ को पकड़ा, यहाँ पे पेस्ट किया, लेकिन उसका ओरिजिन मैंने 3/2 पे रखा। तो सर यहाँ पे तो पीछे -3/2 लिखा हुआ है ना। हाँ, तो माइनस होगा, माइनस जस्ट ये शो कर रहा है कि आपकी शिफ्ट जो है वो राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे। माइनस होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, प्लस होगा तो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। सॉरी 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 सॉरी, अगर नेगेटिव होगा तो हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, और अगर पॉजिटिव होगा तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। अगर आप प्रीवियस में देखें हमारे पास 3/2 था, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है, ये देखें, ये जो आ रहा है दिस वन, या ये 1 था, यहाँ पे तो -1 आया। तो हम यहाँ पे जस्ट साइन को देख रहे हैं, साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेफ्ट शिफ्ट है या राइट शिफ्ट है। बाकी हमने इस यूनिट को देखना है, ये यूनिट 1 यूनिट है, 1 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, जहां पे भी होगा 1 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफ चला जाए। अब ये जो है -2 था, -3/2 है, -3/2 यहाँ से कहाँ पे पास कर रहा है, सॉरी +3/2, प्लस बता रहा है हमें लेफ्ट साइड पे जाना है, और ये -1.5 है, ये -1 है, ये -2 है, इस साइड पे +1 है, इस साइड पे +2 है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव हमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। इसका इसके साथ लेना देना नहीं है कि हमने एग्जैक्टली -1/2 है तो -1/2 से ही पास करवाना है। नो, माइनस रिप्रेजेंट करना है, आपने राइट साइड पे ग्राफ को लेके जाना है, प्लस बता रहे हैं आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफ को लेके जाना है। ये हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल शिफ्ट है उसका उल्टा है। वहां पे प्लस एज करते थे ऊपर जाते थे, यहाँ पे प्लस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं। वहां पे नेगेटिव एज करते थे, नेगेटिव के करते थे, हम नीचे आते थे। यहाँ पे नेगेटिव करना है तो हमने राइट हैंड साइड पे जाना। ठीक है, क्लियर? यस सर, यस क्लियर है। ओके, अब एक छोटी सी एक्टिविटी जल्दी से जनरेट करें। आपके पास ग्राफ है y = x² का, एंड यू नीड टू प्लॉट, इसका ग्राफ मैं बनाए देता हूं, बड़ा फेमस ग्राफ है। प्लीज प्लॉट द ग्राफ y = x + 5/2 - e। शाबाश, आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर सारे प्लॉट करें, और फिर एंड में इसको कंपैरिजन करते हैं कि जो मैंने प्लॉट किया और आपका प्लॉट जो है वो क्या वो सेम है। जल्दी से, बगैर इसमें आपने पॉइंट्स नहीं लेने, प्लीज डोंट टेक द पॉइंट्स, use the original graph y = x² and use the concept of horizontal and vertical shift, right? सर ये -3 कहाँ से आया? So I need to plot this graph. So see, man, सर एक मिनट पिछले वाली वो स्क्रीन करना। Muhammad Ateeb, in this यस सर। graph you have two type of shift, horizontal shift and vertical shift, वर्टिकल। right? So first of all, यस सर। choose anyone, choose any shift, or either you can select horizontal shift or vertical shift. First of all, say मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम करने जा रहा हूँ। पहले मैं इसका प्लॉट करने जा रहा हूँ y = x + 5/2 का स्क्वायर। इग्नोर दिस -3, इग्नोर दिस -3। इसका ग्राफ क्या बनेगा?
प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और बारी बारी इसके बारे में बताएं कि ये शिफ्ट कैसे होगा, राइट हैंड साइड होगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, लेफ्ट साइड पे होगा ये। लेफ्ट साइड पे होगा जी। एनीवन एल्स? यस सर, लेफ्ट साइड पे होगा। दैट्स ग्रेट, शाबाश, सर दैट्स लेफ्ट ग्रेट। पे होगा। यस। ओके, लेफ्ट साइड पे कितना शिफ्ट होगा? 2.5। 2.5 2.5 units. यस यस यस, यू आर राइट। ख्वाजा साहब किधर हैं? आगे। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको प्लॉट करते हैं। ओरिजिनल जो उसका ओरिजिन है y को x स्क्वायर का, वो o से पास कर रहा है। ओके ओके, ये 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2, -3, and this is 2.5 unit, and this is plus sign, so this graph will shift on the left hand side by 2.5 unit, and origin will be here. So this is the graph of y equal to x plus 5 by 2 whole square. Okay, now my next part, second part. Now you have graph of y equal to x plus 5 by 2 square. This graph is known to us, and this is passing from there, from minus 2.5. Now you have to plot y equal to x plus 5 by 2 whole square minus 3. And this is the vertical shift by 3 unit, and upward or downward? Downward. Downward. Downward by Downward कौन सा ग्राफ मूव होगा? This one. यह 3 यूनिट नीचे चला जाएगा, राइट? सो हमारे पास ये ऑलरेडी Yes, sir. मौजूद है, तो ये यहाँ पे -1, -2 एंड -3, ये कहाँ से पास करेगा? शाबाश, इसी ग्राफ को उठाएंगे और ये अब हमारे पास किसका ग्राफ बन गया है? x plus 5 by 2 Vertical. square -3. तो हमारे पास ग्राफ क्या बना? शाबाश, एट द एंड। सर ये -3 वाले की समझ नहीं आई। बेटा हमारे पास ओरिजिनल ग्राफ y इक्वल x प्लस 5 by 2 का ग्राफ ये मौजूद है ना, दिस वन। -3 और +3 जब हम करते हैं तो हम ऊपर की तरफ ग्राफ को लेके जाते हैं उतने यूनिट, और नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड आता है। तो ये हमारे पास x प्लस 5 by 2 का ग्राफ मौजूद है। -3 किया तो -3 यूनिट नीचे ले आएंगे, इसी ग्राफ को उठाया, इस ग्राफ को उठाया, इसको 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट नीचे लेके आया, तो हमारे पास ये ग्राफ बन गया। इसको मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ये -3 है और ये -2.5 है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। जी मोहम्मद हसन। हसन बोलें, शाबाश। सर मैं पूछ रहा था अगर पॉजिटिव थ्रू होता तो। अब पढ़ जाता। एक और Okay. एक और एक्सरसाइज करते हैं। ओके, यू हैव ग्राफ ऑफ y इक्वल टू किया जाए, चलें x क्यूब कर, और इसका ग्राफ आप सबको पता है क्या होता है। ये हमें पता है, राइट? नाउ इसका ग्राफ में ट्राई योर लेवल बेस्ट।
So first of all, you need to plot this graph, this function. So this shows that your graph of, sorry, this is cube, not square. First of all, you know that this is a horizontal shift. There is some shift in x coordinate. So see, and this is this h has sign negative. So if the h has sign negative, then your original graph will move towards Right side. right hand side. That's great. Right. Right hand side. So original graph is this one. Right. So 1 by 2, suppose that this is 1 and 1 by 2 is somewhere here. तो सेम ग्राफ को हम कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दें, उसका ओरिजिन हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया. राइट, ये किसका ग्राफ बना है शाबाश, जल्दी से बताएं. x minus 1 by 2 का क्यूब. That's great, shabash. Okay, now you have the graph of this function. You have the graph of this function. So you need to plot y equal to x minus 1 by 2 cube plus 10. So ये ग्राफ हमारे पास अब नाउन है प्लस 10 यूनिट, मतलब अब y में ये चेंज होगा, ठीक है, अपवर्ड बाय 10 unit. by 10 unit. Yes, that's great, shabash. So you will have okay, 5, 10, 15, minus 5, minus 10, minus 15. So this origin, this point, this origin will move. This is 1, say this is 1, this is 1 by 2. You can say that, not like this one. Over here. तो सेम ये ओरिजिन जो हमारे पास यहाँ पे था, इसको उठाएंगे यहाँ पे, इस ओरिजिन को, और ग्राफ को उठा के जस्ट हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे. अब ओरिजिन हमने यहाँ पे बना दिया. कोई कंफ्यूजन है इसमें? अब नो सर. ओके फाइन. अब आप लोगों ने प्लीज एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं 1.2 में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शिफ्ट, और उसके बाद ये जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों शिफ्ट मिक्स हों. सर इससे पिछली वाली स्क्रीन शेयर कर देंगे तो. जी मैं करता हूँ. तो ये आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. फाइन. ये बेटा ये सारे के सारा जो आपके पास है, ये सारे के सारा लेक्चर भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर, और ये जो हैंड आउट्स हैं ये भी आपको मिल जाएंगे. वहीं पे आपको जाना पड़ेगा, वहीं से आपको कौन कौन से करने हैं? जिसके एक्सरसाइज 1.2 में देख लेना, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शिफ्ट क्वेश्चन मौजूद है, वो क्वेश्चन आपने करने हैं प्रैक्टिस के तौर पर. और प्लीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं वो जरूरी नहीं है कि आपने सर आपके आवाज बहुत, ये जरूरी नहीं है बेटा कि आपने सारी एक्सरसाइज ही अटेम्प्ट करनी है. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सिर्फ लेक्चर से समझ आ गया तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं है.
मीन उस वक्त तक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। ठीक है, वो आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से क्लियर हो जाता है तो बाकियों को छोड़ दें। वो 10 करने से भी क्लियर नहीं होता तो फिर 11वां भी लाजमी करना है। ठीक है, ये बिल्कुल भी इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने पूरी एक्सरसाइज ही करनी है, और ये भी नहीं है कि आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। ये अप टू यू है, जो मर्जी करो, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। सर अटेंडेंस लग गई है? जी मैं लेने लगा हूँ जी अटेंडेंस। अब हम अटेंडेंस की बात करने लगे हैं जी, इसको अब हम बंद कर देते हैं। ठीक है, और मीनवाइल अटेंडेंस प्लीज। अब्दुल मलिक वली, ये नहीं है। अब्दुल मलिक वली है। Okay, actually there is some issue with internet. Our portal is closed, a portal, क्योंकि वो उसकी duration होती है 30 या 40 मिनट। So let me log in again. Shows no internet. I don't know what is. Okay, it's fine now. Let me check. Recheck. C12. So, okay, please. Abdul Malik Wali. Sir, Yes. Abdul Malik has issue in sign in. Okay, okay. Please ask him. Please resolve your issues and next time be in class. Yes, he attendance with me. Okay. Abdul Rahman Pashi. Abu Bakr. Abu Huraira. Adiba Akram. Ahmed Amin. Ahmed Bhatt. Hassan Rehan. Sadiba Akram present. Adiba Akram. Hassan Ramzan. Present, sir. Hassan Hussain. Ail Arshad. Present. Ail Arshad present. Yes, sir, present. Ali Heather. Bilal Ahmed. Itsham Ashraf. Present. Itsham Ashraf. Ishatul Present. Razia. Okay. Ishatul Razia. Fasiha. Hafiz Present. Mohammed Junaid. Present. Just a minute. Yeah.